Bismillahirrahmanirrahim. Multan Public School and College for Boys and Girls. This lecture is about organic chemistry, carboxylic acid for O level 10 chemistry. I am Mr Saeed Tahir from Multan Public School and College and will explain carboxylic acids in detail. First of all, the concept map of carboxylic acids and derivatives is we will discuss introduction, nomenclature, formation, physical properties, chemical properties, and application, means uses. We will discuss all these things in detail. Now we come towards carboxylic acids. What are carboxylic acids? Carboxylic acids are a group of compounds, organic compound that contains a carboxyl group COOH attached to an alkyl group. The general formula is RCOOH, whereas R is an alkyl group. Important examples are ethanoic acid, amino acids, and fatty acids. Then structural formulas of carboxylic acids. Structural formula shows number one, if carboxylic acids have one carbon, like first acid, दिस इज कॉल्ड मिथेनॉइक एसिड. एक कार्बन के अल्केन को हम मीथेन कहते हैं, उससे मिथेनॉइक एसिड बनता है. ऑन द सेकंड नंबर, 2 कार्बन का CH3COOH इथेनॉइक एसिड. 2 कार्बन एटम्स को हम इथेन कहते हैं एंड दिस बिकम्स इथेनॉइक एसिड. 3 कार्बन एटम्स को हम प्रोपेन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द एसिड विच कम्स फ्रॉम प्रोपेन इज प्रोपेनाइक एसिड. देन 4 कार्बन एटम्स CHCCC, C4, H9, COOH, CH3, CH2, CH2, COOH is butanoic acid. CH3, CH2, 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 COOH, pentanoic acid. All these structures are compulsory for you. You have to write in your notebooks. Also try to exercise, especially I will advise you to write these structures 5 times, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर्स आपके काम आ सके एंड यू लर्न दिस बाय हार्ट बाय एक्सरसाइजिंग इट. Now preparation of carboxylic acids. Preparation of carboxylic acid from alcohols. Alcohols are normally oxidized to carboxylic acid like ethanoic acid by reacting ethanol with oxygen from air. This reaction happens with the help of microorganisms like bacteria, which help in oxidation of alcohols. How this reaction occurs? Ethanol plus air, arrow, in the presence of bacteria, ethanoic acid plus water. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं. देन वी राइट द इक्वेशन विद फार्मूलाज. C2H5OH ethanol plus O2 in the presence of bacteria. This becomes CH3COOH plus H2O. The second method, by using potassium dichromate, in which
we use chromium 6 solution in presence of dilute sulfuric acid. During the reaction, potassium dichromate solution turns from orange to green. ये टेस्ट भी है इथेनॉल का। इथेनॉल का जब टेस्ट करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट की ऑरेंज क्रिस्टल्स के अंदर जो पर्सन होता है सस्पेक्टेड, उसे हम कहते हैं कि उस बैग के अंदर वो क्या करे, उसके अंदर ब्रीथ करे, सांस ले, या उसके अंदर मुंह डाल के या मुंह लगा के थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश करे। अगर किसी शख्स के मुंह में इथेनॉल होगा, ये अल्कोहल होगा, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ड्यू टू सोडियम dichromate, and the orange crystals of sodium dichromate will turn into green. When the crystals turn from orange to green, this is the test of ethanol. Ethanol plus oxygen in the form of atomic state. O in brackets shows that this oxygen is not in molecular form, but this is present in the form of atomic state. Then what happens? CH3COH plus H2SO4. इसमें दो reagents होते हैं, K2Cr2O7 and then H2SO4. ये दोनों चीज़ें compulsory हैं to complete this reaction. Now physical properties of carboxylic acids. Number 1. Many carboxylic acids are colorless liquids with disagreeable odors. Number 2. Carboxylic acids with 5 to 10 carbon atoms all have vinegar-like odor. These acids are also produced by the action of skin bacteria or human sebum. Skin oil, उसके ऊपर भी ये बनता है. Then the acids with more than 10 carbon atoms are wax-like solids, and their odor diminishes with increasing molar mass and resultant decreasing volatility. Means उनके बुखारात नहीं बनते जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज हो जाता है. Carboxylic acids exhibit strong hydrogen bonding between molecules. They therefore have high boiling points compared to other substances of comparable molar mass. Notice that the boiling points increase with increasing molar mass, but the melting points show no regular pattern. And the last property is they are non-electrolyte because they all have covalent bonds. तो covalent bonds रखने वाले जितने भी compounds होते हैं usually they are non-electrolyte. Electrolytes वो होते हैं usually जिनमें ionic bond होता है. अगर किसी organic compound के किसी एक part में कहीं ionic nature पाई जाए तो वो फिर क्या हो जाता है, that becomes we say that electrolyte. Uses of carboxylic acids. Carboxylic acids and their derivatives are used in the production of polymers, biopolymers, coatings, adhesives, and pharmaceutical drugs. They also can be used as solvents, as food additives, antimicrobials, and food flavorings. और carboxylic acids जैसे जो first acid है which is known as ethanoic acid, और ethanoic acid is usually जिसको हम कहते हैं vinegar या सिरका. ये हमारे घरों में हमारे रेफ्रिजरेटर्स में मौजूद होता है because it is used in flavoring of foods, और स्पेशली खाने में इसको ऐड किया जाता है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक
जो मैंने स्टडी की कि जिस घर में सिरका है यानी विनेगर है वो घर सालन से खाली नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद फरमाते थे। इस हवाले से इसका बहुत बड़ा यूज़ ये है कि ये एक फूड फ्लेवरिंग में भी इस्तेमाल होता है और उसके साथ साथ फूड की क्वालिटी इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो ये हैं यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फूड एडिटिव्स का मतलब है किसी भी फूड में इसको ऐड किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल मीन्स कि इट kills the microbes like bacteria and fungi, etc. Chemical properties of carboxylic acid. Number 1, reaction with sodium hydroxide. Ethanoic acid plus sodium hydroxide arrow sodium ethanoate plus water. ये हमने पहले वर्ड इक्वेशन लिखी है। फिर CH3COOH प्लस NaOH एरो CH3COONA सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें साल्ट और वाटर बनते हैं। ये एक ऑर्गेनिक साल्ट है और उसके साथ वाटर बन गया है एंड द सोल्यूशन एट द एंड टर्न्स न्यूट्रल with pH 7. Then reaction with metals. Ethanoic acid when reacts with magnesium forms magnesium carbonate, magnesium ethanoate and hydrogen gas. CH3COOH plus Mg. Mg belongs to group 2 in the periodic table. It has a valency of 2, hence its valency exchanges with ethanoate ion and the resulting formula becomes CH3COO twice Mg magnesium ethanoate plus H2। जितनी भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, hence we write H2 gas। Then reaction with sodium carbonate. Ethanoic acid when reacts with sodium carbonates forms sodium ethanoate, water एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितने भी कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वी से देम, तो वो सारे के सारे जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक साल्ट बनाते हैं। हेयर दिस हैपन्स CH3COOH प्लस Na2CO3 एरो CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। Now, derivatives of carboxylic acids we will study here, and the process of forming esters is called esterification. What is esterification? Yeah, what are esters? Esters are derived from carboxylic acids. A carboxylic acid contains the COOH, and in esters, the hydrogen in this group is replaced by an alkyl group। लास्ट वाला हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है किसी अल्काइल ग्रुप के साथ। कॉमन एस्टर इथाइल इथेनोएट। द मोस्ट कॉमनली डिस्कस्ड एस्टर्स इज इथाइल इथेनोएट इन दिस केस। द हाइड्रोजन इज in the COOH is replaced, has been replaced by an ethyl group. For example, reaction of ethanol and ethanoic acid to form ethyl ethanoate and water. How this reaction occurs? CH3 C2H5OH plus CH3COOH reversible arrow CH3COOCH3 that is called ethyl ethanoate, methyl ethanoate, C2H5. Here you are not seeing the digits CH3OH, not here, but C2H5OH in the beginning, then CH3COOH reversible arrow CH3COOC2H5,
plus H2O. This is also a typical uh, typographical error when we add a paragraph or something from one source to another source. This happens. Then uses of esters. There are various uses of esters. Number one, esters that have fragrant odors are used as a constituent of perfumes, essential oils, food flavorings, cosmetics. इस सब में esters use होते हैं. Esters are used as an organic solvent. ये organic solvent के तौर पर यूज होते हैं. Natural esters are found in pheromones, hormones के तौर पर. Naturally occurring fats and oils are fatty acids, esters of cholesterol. Then phosphoesters form the backbone of DNA molecule. Nitrate esters such as nitroglycerin are also known for their explosive properties. And then the last one is esters are used to make plastics, and esters are used to make surfactants and soap detergents. ये भी इसके uses के द्वारा चलता है. At the last, homework. Write all the equations and formulas of carboxylic acids in your notebook. इसके साथ ही best wishes. I will advise you again that in your book, जो टेक्स्ट बुक है, from page 331 to page 335 ये टॉपिक गिवन है. इस टॉपिक के अंदर you are advised to write all the formulas present on 331 पे एंड 332 पेज पर जो भी फार्मूलाज गिवन हैं वो उसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, ये सारे के सारे आपने लिखने हैं. देन देयर इज़ ए पिक्चर ऑर्गेनिक एसिड्स वेयर दे आर यूज्ड. ये पेंट्स में, ड्रग्स में, प्लास्टिक्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, डाइज में और इथेनॉइक एसिड्स में यूज़ होता है. हेयर वेयर दे आर फाउंड ऑर्गेनिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड. ये टेबल 4 है पेज 332 पर. यू हैव टू आल्सो रीड इट केयरफुली. देन यूजेस ऑफ एस्टर्स टेबल 24.4 पे है, वो भी आपने स्टडी करना है. और इसके साथ ही आज का ये टॉपिक एंड होता है. एंड अगेन आई विल एडवाइज and I will say to all the students that write all the equations and formulas in your notebook and exercise it about 5 times. Like alcohols, you will have to write carboxylic acids. Also read it carefully from the book. Also use the tables in which different informations are given. Then test of alcohols, जो कि alcohols के टॉपिक में है, वो भी आपने स्टडी करना है. और लास्ट पे
there is a summary of the chapter, 335 page summary है, and at the end there is a concept map of the chapter. concept map से भी आप खासी चीज़ें हासिल कर सकते हैं. इसके साथ ही बेस्ट विशेस. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह.